अवार्ड से हासिल करछंती 2004 रे यंग एशियन बायोटेक्नोलॉजिस्ट प्राइज सोसाइटी फॉर इम्यूनोलॉजी जापान रु से ए पुरस्कार पाइछंती। तालिका बहुत लंबा अछि सर, बहुत बहुत स्वागत करछि आपन को। Now I like to invite Dr. Ramesh P Menon to the stage. से बोधे खूब शीघ्र आम सहित जोड़ी हेबे सर आसीगले। Additional Professor of Pediatrics Neonatology एम्स दिल्ली। Small introduction तांगर 1999 रे MBBS from Trivandrum Government College, winner of KCBPL Raja Award from Kerala College, faculty in Delhi AIMS and Kerala Government, Pediatric Intensive Care Unit fellowship from RCH Melbourne, Australia. Thank you बहुत बहुत स्वागत करिवे। Now please welcome Dr. Devi Prasad Dogra to the stage, please. Associate Head Computer Science and Engineering, IIT Bhubaneswar. Done BTech from Haldia Institute of Technology in the year 2001. 2003 MTech IIT Kanpur. 2012 PhD from IIT Kharagpur. Done ETR research from South Korea. Research group leader Samsung Research Institute Noida. More than 120 research papers international journal एवं conference रे तांकर रहिछि। Now please welcome Dr. Pranay Panigrahi to the dais, Chief Consultant Pediatric Surgery and Kid Urology in Vikas Multi Speciality Hospital, Baragad. बहुत बहुत स्वागत करछि आपन को। सक्सेसफुल ऑपरेशन कथा कहिबी। 3 लेग चाइल्ड कथा आपण समस्त सुनिथिबे। गाजीपुर रे सफल ऑपरेशन से करथिले। एमकेसीजी रे 5 वर्षर शिशुर लुहा रड बाहर करथिले एवं सर्जरी करथिले। 7 केजी रो ट्यूमर शिशु पेटरु बाहर करथिले। तांकर अनेक गुडी अचीवमेंट रहिछि एवं बनारस यूनिवर्सिटी रे पूर्वतन एसोसिएट प्रोफेसर मध्य से रहिछन्ते। आपण मध्य बहुत बहुत स्वागत करबी। वर्तमान डायस को स्वागत करबी डॉक्टर सीके दीपा, Senior Consultant Ophthalmology, Apollo Hospital, Bhubaneswar. More than 15 years of experience in eye surgery. 2003 MBBS from SCB, 2009 MS from MKCG. 2009 कथा जदि कहबा second prize winner in State Ophthalmology Conference. बर्तमान सब अतिथि स्टेज आसी सारी जहाँ मोर आलोचनार विषय वस्तु रही आम खूब शीघ्र आलोचना को जावा, किंतु प्रथमे अतिथि मानक स्वागत करने चाहिए। तो सेशन 4 बर्तमान आरंभ करवा। टेक्नोलोजी इंटीग्रेशन एंड लाइवलीहुड क्रिएशन जहाँ टॉपिक रही जदि आम कहवा यूजिंग हेल्थ टेक्नोलोजी फॉर नीड बेस्ड सॉल्यूशन इन ए मोर साइंटिफिक वे एडॉप्शन ऑफ एआई। आम अतिथि मान जो रही पैनलिस्ट रही से अधिक तापर आलोकपात करेंगे जे किभली भाव में एआई कथा कहतु, नुआ टेक्नोलोजी कथा कहतु, किभली तार व्यवहार आम करिपरिबा, रोबोटिक सर्जरी कथा कहतु बा रिमोट एरिया रे किभली भाव में सबू टेक्नोलोजी पहुँची पार। आम कोविड समय देखीचे केमती टेक्नोलोजी व्यवहार होता, टेलीमेडिसिन कथा कहतु बा अन्य अनेक गुड़े उदाहरण रही, किंतु बेसी समय नेबिनी कारण आम सहित एक्सपर्ट पैनल रही आम अनेक किसी जाना। डॉक्टर अमूल्य पंडा को अनुरोध करी जी कि सेशन को मॉडरेट करेंगे। सर कारण आम सहित एक्सपर्ट पैनल रही आम अनेक किसी जाना। डॉक्टर अमूल्य पंडा को अनुरोध करी जी कि सेशन को मॉडरेट करेंगे। ऑर्गेनाइजर फॉर इनवाइटिंग मी एंड माय पैनल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग कारण
आमर सहित एक्सपर्ट पैनल रही आम अनेक किसी जाना और डॉक्टर think अमूल्य पंडा को before you अनुरोध think करी about technology, जी what के is सेशन को organization मॉडरेट has करेंगे the organizer one thing which has taught us everything is COVID. This is a very interesting. Remember, when COVID happened, only two आमर things सहित were एक्सपर्ट पैनल रही your immunity आम is अनेक strong. किसी जाना और That means if डॉक्टर you are अमूल्य पंडा को before you अनुरोध think करी about जी grandmother के and सेशन grandfather को मॉडरेट planning करेंगे the organizer one thing which has taught us everything, or if you took vaccine. This is a very interesting. Remember, COVID happened, only two things were. So two things are important. Immunity is strong, your traditional thing as well as your modern thing. We have been talking about traditional medicine, we are talking about modern medicine. I think that's where the technology comes. The technology means doesn't mean that you only take about transplantation, surgery and things like that. But you need to understand that the technology which we develop in our country. In fact, I can go on. I worked in an immunology institute. I can tell you, immunology originated from Mahabharata and Ramayana. I can go beyond that. Even if you read Charak, he has explained what is immunology. So in this context, I think it is a very interesting time so that you can take both traditional as well as the modern medicine. And I am happy that most of my colleagues sitting here are doctors and are engineers. But let me tell you about little bit about, and people talk more about the traditional medicine and Ayush, which is very much part of our thing. But let me tell you what new technology coming in future. I don't know. It may not. It may take time to come to Odisha, but worldwide things have changed. It is now the age of point of care diagnosis, point of care hospital, and point of care doctor. You don't have to go to anybody to do your testing. That's point of care diagnosis. In fact, now if you go to big hospital, the cell therapy product is manufactured in the hospital. That's point of care manufacturing. And the point of care, morning somebody was telling there is no doctor. The days are not far. You will have a hologram of your favorite pediatrician. You don't have to go to him. You will see him in the screen with artificial intelligence. You talk to him. He has all your data, all your vitals. You consult him in your home. No need to go to doctor. We are talking, koi aata nahi, koi rehta nahi. Those days are over. In fact, in future, AI-based technology will be that you will see your doctor in your home, in your screen. And with animation, you can talk to him with all the vitals available in his phone, and things have developed. But never forget the old method of medicine which we follow in our traditional system. Because morning may, if you remember, Dr. Bisoi told one thing, swasthya. Swasthya means you first understand yourself. That means you understand your immunity. If you are immunologically strong, nothing will happen. But that comes if you have traditional system. So all I want to say that at this point of time, you need to take both from the traditional system as well as from the technology system to provide health care to the people. With this I end, and I will tell my colleagues, Professor Menon, it's good that in the panel we have doctors, pediatricians, neonatologists, because if you see the future of a good health of a society depend if the mother is healthy and the child is healthy. And we are happy that people are here from pediatrics background. I think they will be able to tell you. I'll go to Dr. Menon. Thank you for that nice introduction. I would want you to focus for, let's say, 5 minutes. Albert Einstein said, knowledge is limited, but imagination encircles the world and beyond. Medicine as we practice is actually based on conjecture, and it keeps on improving by the related murders that happen. Need not necessarily of the patient, but of the person who is delivering it also. The rigor of scientific experiment, its results, new discoveries, research, methodology, these used to be supreme in medical science also for a long time, till the world witnessed world wars, 1 and 2 in quick succession. There was no medical reason for it or an explanation for it.
But if you think a little bit more, was there not a reason, a medical reason behind it? That is when so-called Western medicine or modern medicine began embracing humanity and arts to rejuvenate, restore, and redefine itself. Coming to the modern time, now you see, we have technology, development, we talk in terms of energy and its flow or flux and its cost. We have intelligent networks and systems which would take care. It may substitute, if not enhance the capabilities of the human interface. We have self-organizing and performing nanobots and gene edits, which are biocompatible and can be put for therapeutic and diagnostic purposes. We hear all this and it is now. The future is actually now. However, there is a caution which must be there in young minds as well as in old, that bereft of humanity or the concern for the human being, it is a free fall. I would just highlight one more. Our circumstances within our socio-cultural national situation, we have a strong residual presence, I would say, still of the indigenous systems of healthcare practices, delivery and practitioners. We can choose at this point to reinvent the wheel, go through the technology development, insurance protocol, and then suffer the deterioration, integrate humanities as short system modules or student modules, so that the future doctor or the people who are going to practice healthcare delivery system will have an integration at multiple levels of literature, arts, philosophy, medicine, healthcare therapeutics, physiotherapy, nanotechnology, distance diagnostics. In that, I would just give one or two examples. In that, when the Mars rover had been launched by the US, they had a brainstorming session to which I had also been a party, where they devised something called a statistical model of Chernoff facies, which was used for pediatric intensive care, wherein faces will be colored or made depending on the biological variables of the patient. Now the patient would be in the east coast of the US, doesn't matter. The healthcare provider would be in the west coast. And through that, he or she would be able to decide the path of treatment and follow-up to be taken by the child in future. With that, I would just thank and invite my next colleague. Thank you. So, I'm probably from a different domain. I'm from IIT Bhubaneswar. I would like to speak a bit about how artificial intelligence can actually come into the current perspective and it can be useful. Let me tell you 3-4 instances which I feel that I would like to share with you, which may be interesting to you. And I feel that these use cases are pretty much connected to the current topic. 3 years back, we all know that what the entire world went through, that COVID. But if you basically look into that, the generation, I mean to say that where from it has started and how it has spread, okay, we have learned a lot. I mean to say that starting from how to keep ourselves safe from the virus getting spread, and then how to behave in a room with maintaining a social distancing. All these things you have learned it. The question remains that if similar to that comes again in different forms, are we really ready to tackle this? Our healthcare infrastructure is ready to tackle this or not? This is one question. And second question is that, is it possible to detect it beforehand? So being a part of artificial intelligence group at IIT Bhubaneswar, what I feel that at least we can create systems
that will be able to predict that we are moving towards a scenario where a similar situation may arise. Okay. I have been working closely with Odisha government during the first COVID outbreak. We were creating AI-based system to understand that when very different people actually came back to Odisha, particularly Odisha is a state where a lot of migrant workers, they actually worked in various other states. So I was part of the Odisha government committee to come up with a solution. How can we basically figure it out that when these people are returning to the particular district, we can keep them in a confined area so that the spread gets minimized. So I was part of the team. What we found that it is actually possible to come up with some model, which is an AI-based model. I will not go into the details, which essentially help the government to come up with certain strategies. I'm not talking about the number of cases will be prediction. We are not doing predictions, but we were basically giving them some strategies that how to basically ensure that they do not get, people are not mixed up with those people. The second question is that, vector-borne diseases are very common these days. Okay, and since morning I have been following each and every discussion, starting from the shortage of manpower, how can we ensure that the people who are living in rural India, they actually get to the best of the qualities of the healthcare services. Like people, say something happens in Western Odisha, if the person needs to travel to Bhubaneswar, 400 kilometers from the Western Odisha, by the time the golden hour is lost. So what is the possibility? Technology can come here itself. So in what way? We might not be a neurosurgeon available into a remote village of Western Odisha. But it is possible that with the help of AI, the people who are not aware about the golden hour, okay, so the preliminary decisions can be taken at the local hospitals itself. So, IIT Bhubaneswar in collaboration with AIIMS Bhubaneswar, we are actually working on several such projects. I'm not telling you explicitly one project. There are many projects. Bhubaneswar, he must be knowing, there are several projects we are running parallelly. The reason is that medical science is not defined within the city-oriented things. It should reach to the common people of this state and of this country. Okay. And I believe with this conclave organized by Argus and other healthcare professionals and various people involved with this will create a big awareness in the society. Okay. And we, each and every member of this country, we have our responsibility to ensure that these healthcare facilities, whatever we are getting it, sitting in the city of Bhubaneswar, each and every people of this state, they are also supposed to get the similar level of service staying at their home. We do not want Bhubaneswar to be a place where everyone will come. That's not going to solve the problem. Let's try to solve the problem from the root. We'd like to create infrastructure, maybe digital infrastructure with the help of AI, so that the healthcare actually reaches to the each and every beats and corners of this state and as well as this country. So where I believe AI is playing a big role. With that, I would like to finish my talk. Thank you all. Good evening. सुना जाउछि ऑडियो. गुड इवनिंग. मो ना प्रणय ओडिया रे स्टार्ट करछि प्योर ओडिया. बिलोंग टू ए टियर 2 सिटी बरहमपुर, इवन टियर 3 ब्लॉक पुरुषोत्तमपुर. Studied in a state government college sponsored by state government. Then went to a good university, Banaras University. So basically mo subject होची pediatric surgery. Pediatric surgery माने जो माने छुआ माने ऊपर ऑपरेट करंती. Different from general surgeons, different from pediatricians. तो blessed कि 1980s 90s born जो माने से माने exact transition of technology देखी जानी. मु देखी से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जार शटर पड़े आउ से ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रू आम कलर टीवी, एलईडी टीवी, ओएलईडी टीवी, ट्रांसपेरेंट स्क्रीन्स, सेम मोबाइल आसिला. से मोबाइल जोड़ा अधा किले वाला मोबाइल टू आज आम जो लेवल रे अच्छा तो
technology always will improve unless and until human kind earth रो obsolete हे होची आमे टेक्नोलोजी डेवलप करवा ही करवा किए चेंज कर पारे नो वन हाँ किसी बूस्ट होती जमी कोविड आसला तो आम किसी बूस्ट कले जमी कि टेलीमेडिसिन हो टेली हेल्थ हो बहुत सारा जिनस एमती चेंज है जोटा कि आमको लगे ओके हेल्थ इंडस्ट्री भी आम टेक्नोलोजी यूज कर एज ए सर्जन बहुत सारा गैजेट्स आमको दरकार पड़े एमती सिंपल गोटे टेबल चेयर गोटे ओटी लाइट रे आम ऑपरेट कर पारुनु से भीतर जदि पीडियाटिक सर्जन हो तो ता लाइफ आहरी चैलेंजिंग कि अध किले छुआ 2 किलो छुआ ऑपरेट करिया पड़े तो वी नीड ए टीम एमती ना कि मुझे जड़े सर्जन हो गली ऑपरेट करदेवी आ सब ठीक हो मत टेक्नीशियंस दरकार मत एनेस्थेटिस्ट दरकार मत गैजेट्स दरकार तो गैजेट्स जहाँ भी आम यूज करूँ धीरे 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 डेवलप हो मो टीचर्स मैंने जहाँ यूज करते मु मे बी आटा यूज करनी मत लगुच कि आउटडेटेड तो मुझे आहरी नुआ यूज करी कि एमती ही आज गोटे दिन आसला कि आम रोबोटिक सर्जरी बहुत कॉमन एवरी स्टेट इज हैविंग रोबोट्स इवन ओडिशा इज हैविंग 4-5 रोबोट्स नाउ वी आर डूइंग मेनी रोबोटिक सर्जरी बहुत सारा केसेस ऑपरेट करचे आम यूरोलॉजी हो न्यूरो सर्जरी हो कार्डियो सर्जरी हो बहुत सारा रोबोटिक सर्जरी आम केसेस कर आरंभ करदे तो फ्यूचर ऑफ ओडिशा इज टेक्नोलोजी आम चेंज करें बीट नेशनल इम्पोर्टेंस इंस्टीट्यूट हो एम्स भुवनेश्वर हो बा स्टेट इंस्टीट्यूट्स हो फाइनली आम टेक्नोलोजी तो डेवलप करिया पड़िबो बट निज स्टेट रो एगेंस्ट कया कथा ना बट एज स्टेट गवर्नमेंट वी आर वेरी लाइक लैकिंग इन दिस सेंस आम बहुत स्लो अच्छा आम क्वालिटी ऑफ मेडिकल केयर देवा चाहूने आम चाहूचे कि नंबर ऑफ कॉलेजेस बढ़ेबा नंबर ऑफ डॉक्टर्स बढ़ेबा आम खाली मैन पावर बढ़िया अल्टीमेटली जो लोक गूगल रे देखिकी पढ़ी पार्ची कि मते गोटे कार्डियक सर्जन दरकार मोर हार्ट बर्न हेले जोटा कि गोटे नॉर्मल एमबीबीएस भी ट्रीट कर इवन आयुष भी ट्रीट कर पारियो बट एज कॉमन लेमेन आमे खोजुचे कि कार्डियोलॉजिस्ट विथ 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस गूगल रे 5 स्टार रेटिंग कहार अच्छी तो दिस इज ऑल्सो एन टेक्नोलोजी आम सेमती खोजुचे तार रेटिंग देखुचे तार कमेंट्स देखुचे अच्छा सी भल होता एथर ता पाखु जावा से शॉपिंग स्टार्ट हम कि कौटे अच्छा मो इंश्योरेंस से यूज होना ना तो ये सब जिनस भितर ओडिशा स्टेट कौन कर एवरी सीएचसी को गोटे मेडिकल कॉलेज कर लगी एथिरे प्रॉब्लम कौन हम लोक एक्सपेक्ट करिए कि मु कंधमाल अच्छी फुलवाणी रे मोर कार्डियक सर्जरी ओपन बाईपास हार्ट बाईपास हो जाओ ऑब्वियसली हो पारे तो से लोक जो बैक आउ थे भुवनेश्वर आसो भुवनेश्वर जना पड़ो कि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड मेडिकल कॉलेज रे किसी हो पानी सी आउ थे से कॉर्पोरेट को जीव कॉर्पोरेट को गला लगे कि मोर बहुत खर्च हो मोर पारे इंश्योरेंस ना तो मुझे केमती करी अल्टीमेटली से लोक ही प्रॉब्लम पड़े आम केते डिस्कसन करवा केते कनक्लेव करवा अनलेस एंड अंटिल रूट कॉज रे आम चेंज करूँ आम किसी चेंज कर पारानी तो टेक्नोलोजी एमती होता था कि आम पाखे गोटे जनरल फिजिशियन अच्छी इवन एन आयुष इंटीग्रेटेड सिस्टम हो इवन एन एमबीबीएस जार कि बॉन्ड रे पोस्टिंग होती एट ए पेरिफेरल लेवल तार जदि किसी गोटे हायरकी सेट था कि जड़े एमबीबीएस अच्छी एंड ही इज सीइंग एन पीडियाटिक पेशेंट तो तार जड़े कि गोटे पीडियाटिक गॉडफादर था सिटिंग एट कटक और सिटिंग एट एमकेसीजी और सिटिंग एट एम्स भुवनेश्वर जी कि ताको ऑनलाइन डायरेक्टली से गाइड कर पारता कि देख एटा 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 होची गोल्डन आवर ट्रीटमेंट मत एटा एटा ट्रीटमेंट फर्स्ट देवा पड़ो तो देला परे तो शिफ्ट करा आई एम रेडी टू टेक द केस बट होनी आमे जी ग्राउंड लेवल लोक अच्छी से ट्रीटमेंट एक्जाक्टली जाननी कौन करार अच्छी पीडियाटिक रे डोजिंग कौन पीडियाटिक रे कौन कर सी फंबल कर कि पेशेंट मो सामने न डेथ करू सी चाहूँगी जल्दी पेशेंट भल सेंटर को जाओ वंस भल सेंटर को आसला भल सेंटर कह आज मोर सोमवार आज मोर ओपीडी अच्छी मोर इमरजेंसी ना तो मंगलवार वाला सहित कथा है मंगलवार कह कि बुधवार सहित कथा एमती पेशेंट सबू सिटी खाली बोले जदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो कि नॉर्मल सिंपल जदि कम्युनिकेशन रे जदि ए चेंजटा पळे आसीबो आमे बहुत सारा सॉल्यूशंस पाई जिबा रेफरल सिस्टम सेकेंड होची रोबोटिक सर्जरी रो इंपोर्टेंस माने एज ए सर्जन मु कहबी कि मो पे बहुत इंपोर्टेंस अच्छी एज ए रोबोटिक सर्जरी पेशेंट मु ताको बहुत कंफर्ट दे पारिबी से गोटे दिन रे निज ऑफिस जॉइन कर पारिबो बा निज पेन रिलीफ होबो बट एज ए पब्लिक जो लोकंकर क्रेज अच्छी कि मते रोबोट रे ही सर्जरी करियार अच्छी तार किछि वैल्यू नाही
एमती जगह वैल्यू ना जोड़े कि आम ओडिशा रे गोटे लोक डायरिया रे 4 दिन रे डेथ हो जाउची से सामने रे हम जदी कहबा कि हम समस्त को रोबोट दरकार समस्त को एडवांस लैप्रोस्कोपी दरकार मीन्स एटा आमे ही रंग करछे आमे ही से एडवर्टाइजमेंट करछे कि हम पाखे रोबोट अच्छे हम रोबोट सर्जरी फॉर ए सर्जन एटा बहुत ही कंफर्टेबल जिनस मु पेशेंट आनली टेबल रे सोइली इंस्ट्रूमेंट्स आसला डॉक हैला पेशेंट्स आसला मु निजे गोटे ट्रेनी माने रोबोटिक सर्जरी ट्रेनी एबे ऑनगोइंग ट्रेनिंग चलची डॉक हैला पेशेंट आसला कंसोल रे सर्जन बसिला ऑपरेट कला पेशेंट ऑपरेट हैला गोटे दिन 2 दिन रे डिस्चार्ज हैला फाइनल रिजल्ट इज पेशेंट गेटिंग क्योर्ड बहुत सारे लोग हेल्थ विषय कथा तो मुझे जानी जानी डिजीज उपर जाऊँगी फाइनाली पेशेंट क्योर्ड है सेटा ही मो प्रोफेसर कि मो गुरुजी मत शिखी कम ही इज एन मास्टर मैन इन ओपन सर्जरी एंड ही इज देयर इन ए tier 2 सिटी एंड ही इज रेडी टू डू इट ना बट एते फास्ट टेक्नोलोजी डेवलप कलानी और ताड़ो 10 बा 100 टाइम्स एक्सपेक्टेशंस बढ़िलानी लोकंगर कि आमको बेस्ट सिटी रो बेस्ट हॉस्पिटल रो बेस्ट रोबोट रे ऑपरेट हेबार अछि तो एमिति कौन हो कि इंडिया रू बाहर बहुत सारा कंपनीज एडवर्टाइजमेंट कर बहुत रोबोट्स आम बाहर किणुचे जी फॉर एग्जांपल माने दी डा विंची सिस्टम जोड़ा दी बेस्ट ऑफ रोबोटिक सर्जरी जोड़ा कि लगभग 25 crores लगे गोटे इंस्टॉल करने एंड जो सर्जन्स ट्रेनिंग हम तार एटलिस्ट 1 crore खर्च हुए ट्रेनिंग रे सीटा एबे इंडिया निजे एसएसआई मंत्रा बहुत सारा स्टार्टअप्स आछन जो माने कि 5 crores 3 crores रे देबा पे रेडी अछन रोबोट बट अल्टीमेटली नेबो किए टैक्स पेयर पैसा पेशेंट पे करियो एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल्स एक्स्ट्रा ग्लव्स एक्स्ट्रा डॉकिंग इंस्ट्रूमेंट एक्स्ट्रा ओटी जेतु समय अभाव रही छी नियति बहुत गुडे कथा दिस इज द नेगेटिव पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी आई वाज थिंकिंग कि सारे लोग को समझते अच्छे ही बोलेंगे और अच्छा ही टेक्नोलॉजी के बारे में बोलेंगे द बेसिक रूट कॉज इज कॉन्शियसनेस ऑफ पेशेंट थैंक यू डॉक्टर प्रणय पाणिग्राही बहुत बढ़िया बढ़िया कथा कहले किंतु जेतु समय अभाव रही छी डॉक्टर दीपा थैंक यू आर्गस ए प्लेटफॉर्म पाई कि मु बेसी समय नेबिनी जेहेतु मो पैनलिस्ट माने बहुत गुड़े इंपोर्टेंट पॉइंट्स को ऑलरेडी फोकस कर सारे मु जने ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट माने आखि भलिया डेलिकेट ऑर्गन्स को आमे हैंडल करू तो व्हेन वी टॉक ऑफ टेक्नोलॉजी मो हिसाब रे लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस तेणु टेक्नोलॉजी भी सब बेले इवॉल्व हबो किंबा एडवांस हबो जोठी आम लर्निंग टा स्टॉप हबो सेठी आम ग्रोथ भी स्टॉप हे जिवो तेणु ये जो टेक्नोलॉजी टा इवॉल्व करुची ताकू आमे केमिति हेल्थ केयर फैसिलिटीज रे इनकॉर्पोरेट करिकी पेशेंट रो बेनिफिट को जेतिकी आमे बढ़ई पारिबा सेटा होची द मेन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी जदि सेटा बेनिफिशियल नुह देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट इट तेणु एठी आमे बेसिकली टेक्नोलॉजी को केमिति हेल्थ सेक्टर रे इनकॉर्पोरेट करिबा आ जेमिति मो अन्य पैनलिस्ट माने कहिले कोविड थिला सबुठु बड़ो गेम चेंजर माने कोविड परे ही दैट मेजॉरिटी बूस्ट ऑफ डिजिटलाइजेशन हैला माने गवर्नमेंट रो हो कि स्टेट लेवल रे हो से जो स्कोप कि आमे डिजिटलाइज केमती करिबा पेशेंट मानकु तांको घर सेफ्टी भितरे केमिति ट्रीटमेंट पहुंचे पारिबा जेहेतु सीए तम पाखु आसी पारिबेनी तम स्किल्स टा तांको पाखु केमती पहुंची पारिबो एंड हाउ इट ऑल that phase of development how we evolved incorporating all the healthcare facility with the advanced technology that is what maybe this panel discussion will be all about thank you very much बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपा तबे हम सहित एक्सपर्ट मान रही समस्या मन में बहुत भी प्रश्न थी एआई को लेकिन रोबोटिक सर्जरी को लेकिन तो मो ऑडियंस के पाखु जावाई चाहिए जे जदि जार किसी क्वेश्चंस रही आम सहित पीडियाट्रिक भी रही एआई टेक्नोलॉजी को लेकिन केमती आम ओडिशा कथा कहतु इंडिया रे केमती आगु को जाई परिबा से विषय भी आपनकर मन में जदि किसी भी प्रश्न अच्छी कारण एमती सुजोग बहुत कम मिले एते बढ़िया पैनलिस्ट रही बहुत गुड़िए कथा रही जोटा कि आपण मन भी आसुथबो जदि कहार मन से किसी क्वेश्चन रही तो निवेदिता प्रथमे हाथ टेकिले क्वेश्चन पे तो पैनल जो सार मैंने प्रथम तो नमस्कार तो मो क्वेश्चन ये रहिबो जो रोबोटिक सर्जरी कथा कहले तो एबे हमर ट्रीटमेंट बहुत एडवांस हेलानी
जोटा डॉक्टर माने करि परिबे आमे रोबोट थारु सेति के एक्सपेक्ट करि परिबा कि माने से सक्सेस माने से ऑपरेशन सेति सक्सेसफुल हेई परिबो कि जे रोबोट ट्रीटमेंट करिवो But robot is run by a doctor only, is designed by a person, isn't it? Computer and robots are machine designed by a person only. So a human brain, a machine cannot compete with a human. एग्जैक्टली As simple as that. You may talk artificial intelligence, but यहाँ पे real intelligence है. ओके वो जरूरत है. Yeah. He will be able to tell. या मैम एबे जोटा रोबोटिक सर्जरी कहते तार एक्चुअल टेक्निकल टर्म होची रोबोट असिस्टेड सर्जरी तो आज्ञा। जस्ट खाली आमे जो ह्यूमन रो जो हाथर फ्रीडम अच्छी आमे सेती कंप्लीट फ्रीडम नॉर्मल लैप्रोस्कोपी रे मिलेनी तो सेति पई रोबोट आसला कि से फ्रीडम डा मिलिबो कि आमे बहुत सारा डिफिकल्ट स्पेस रे भी आमे सर्जरी करि परिया सेति पई रोबोटिक सर्जरी आछि मे बी डाउन द लेन मोर 20 इयर्स परे डीप लर्निंग मशीन लर्निंग परे जो फाइननेस ऑफ ए सर्जन कि मु चाहूँ कि जगटा मु एमती ही सर्जरी करी तो सेटा मशीन शिखिबो कि हाँ एटा एमती ही करा जाए फाइनली से देखला कि 100 केसेस कराला 90 केसेस रे परफेक्टली ए जिनसटा करले होउची तो से सेटा शिखि दबो दैट मे चेंज द गेम मे बी आफ्टर 20 इयर्स मे लाइक एवरीथिंग विल बी चेंज मे बी टेली रोबोटिक सर्जरी होथवा मु यूएस रे अछि हम लेकिन अगर उड़ीसा की बात हम लोग करेंगे क्योंकि आप भी उड़ीसा गवर्नमेंट से जुड़े हुए हो तो इसका कितना इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि हम लोग आपसे सुन रहे हैं जो कि एक्सपर्ट है इसमें लेकिन उड़ीसा में इम्प्लीमेंट कैसा हो रहा है एआई को लेकर अगर रूरल एरिया के बारे में बोले हम लोग देखिए एक इम्प्लीमेंटेशन तो मैं खुद किया हूँ और कोविड के टाइम में गवर्नमेंट एक्चुअली क्रिएटेड अ कमिटी आई वाज पार्ट ऑफ दैट कमिटी टू अंडरस्टैंड कि ये जब माइग्रेंट्स पीपल व्हेन दे एक्चुअली केम बैक टू ओडिशा मेनली फ्रॉम गुजरात महाराष्ट्र बैंगलोर एंड a few other states they came back to Ganjam then Cuttack then खुर्दा मेनली 6 डिस्ट्रिक्ट में हमने स्टडी किया था तो ये जो हमने एक मेथड मैथमेटिकल मेथड वी हैव डेवलप्ड इट जिसके हिसाब से वी आर टेलिंग देम कि बेसिकली इतने लोग अगर ट्रेन में बिकॉज दे आर गिविंग अस डेटा ऑन एवरी डेली बेसिस तो उसके लेके हमने एनालिसिस किया था कि आपको इनमें से कितने लोगों को टीएमसी में टेम्पोररी मेडिकल सेंटर्स जो है एक्चुअली दे सेट अप दोस टेम्पोररी मेडिकल सेंटर्स इनटू डिस्ट्रिक्ट्स तो कितने लोगों को रखना चाहिए और कितने दिन रखना चाहिए क्योंकि इसमें ये सोशल इशू भी आ जाता है कि मतलब लोगों को अगर ज़्यादा दिन आप एक कन्फाइनमेंट एरिया में रखेंगे तो उसका एडवर्स हेल्थ इफेक्ट भी आएगा तो दैट एक्चुअली वर्कड अब दूसरी बात है व्हाट सर इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रोबोटिक सर्जरी दिस इज इन ओडिशा में probably it will take time when you will assume that a patient will completely believe on a robot rather than a surgeon okay the reason is that this AI has just come ठीक है अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए आई थिंक द मैच्योरिटी ऑफ एआई विल कम और इनका एप्लीकेशन हर डोमेन पे होगा ठीक है मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ अभी लोग क्या करते हैं ये चैट जीपीटी बहुत आ गया है सब लोग यूज कर रहे हैं अब देखिए चैट जीपीटी का एक्यूरेटली कितना अच्छे से वो लिखते हैं तो जैसे ही इतने अच्छे से ये लोग रोबोटिक हैंड को भी मैनिपुलेट कर पाएगा ना देन प्रोबेबली व्हाट सर इज ऑल्सो सेइंग दैट कुछ कुछ जगह पे वेरी डिफिकल्ट होता है सर्जन का ऐसे हैंड मूवमेंट तो वो आ जाएगा it will take time if you go back Alan Turing said that we call it Alan Turing is known as the father of modern computing he said that the day a computer mimics a human being we don't call it an artificial intelligence it's natural intelligence so natural intelligence आएगा and आ रहा है टेक्स्ट में ऑलरेडी आ गया है ये रोबोटिक्स में और बाकी सारे फील्ड्स में भी आएगा अब ओडिशा स्पेसिफिक अगर बोलेंगे हम ओडिशा में ही बिकॉज आईआईटी भुवनेश्वर एंड एम्स बोथ आर इन ओडिशा ठीक है तो हम दोनों इंस्टीट्यूट्स मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है तो वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन मेनी प्रोजेक्ट्स मेनली आवर ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर दैट जो भी टेक्नोलॉजी आ रहा है वो टेक्नोलॉजी हाउ इट कैन रीच टू द रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ दिस स्टेट और ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स ठीक है तो उसके लिए मान लीजिए टेलीकॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है उसके लिए प्रेडिक्शन भी हो सकता है जैसे हम लोग एक स्टडी कर रहे हैं कि मस्क्यूटो बोर्न जो डिजीज होता है ना दैट्स नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द मस्क्यूटोज यू ऑल्सो नीड टू ट्रैक द वाटर बॉडीज ठीक है जो सैटेलाइट इमेज से अगर छोटे छोटे वाटर बॉडीज जो है उनका अगर आपको सही ढंग से ट्रैक कर पाएंगे देन प्रोबेबली यू विल बी एबल टू टेल दैट मान लीजिए आज से 2 महीना के बाद
what are the probable, vector-borne diseases will be there around this place. So this is also part of technology. ठीक है, ये तो आ रहा है. I can't say that when it will come, but probably with more collaborations with state governments, because I am actively involved, things will come, and probably the rural people of Odisha will get the benefit of the AI and AI-assisted medical technology. I will not say that completely AI is replacing the medical technology. It is AI-assisted medical technology will come. निहाती जमती आम टॉपिक रो थीम भी शेयर होइछि जे टेक्नोलॉजी को केमती व्यवहार करी के हम आगो को जाई परिबा. आ गोटे क्वेश्चन नै जो सर. Sir, this question is for you. We are talking about technologies. So let's say in India, one doctor, when he is seeing the patient, the approximate time it is, let's say, more than 15 to 20 minutes. So unlike developed countries like USA, so here a doctor says a patient in a day, he says 10 or 15% maximum. But here it is different. तो ये क्या होगा जब हम AI and टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे इन फ्यूचर. पेशेंट और डॉक्टर का जो बॉन्डिंग होता है, जो इंटरेक्शन होता है, जो ये लोग जो टाइम शेयर करते हैं, हाउ इट विल बी अफेक्टेड इन फ्यूचर वंस विल बी हाई इन टेक्नोलॉजी. इट माइट नॉट बी राइट नाउ, बट व्हाट आफ्टर 10 years, व्हाट आफ्टर 15 years, ये कितना इम्पैक्ट करेगा ट्रीटमेंट के ऊपर और ये कितनी एक्यूरेसी रहेगी? व्हाट इज योर ओपिनियन? आई गॉट योर क्वेश्चन. देयर इज अ लिटिल बिट एथिक्स आल्सो इन्वॉल्व्ड. हम ये भी मान के चलते हैं कि हम सच में एक पेशेंट को एक रोबोट के हाथ में छोड़ देंगे या सॉफ्टवेयर के हाथ में छोड़ देंगे, इसमें एथिक्स भी आएगा. ठीक है, बिकॉज वी आर रन बाय एथिक्स. ठीक है, सारे डॉक्टर्स दे आर आल्सो दे वांट टू इंटरेक्ट विद द पेशेंट्स. बट मुझे जहां पे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी यहां पे सोल्यूशन आएगा, से वी आर अ कंट्री विथ 1.4 billion population and we don't have experts, okay, to take care about this 1.4 billion. Expert in a sense, I'm not saying we are not we are not shortage in doctors. In the morning session में मैं सुन रहा था इतने सारे डॉक्टर्स हैं, but probably the quality of doctors. तो आप मान लीजिए एम्स में सुबह जब आप जाते हैं इतने सारे भीड़ रहते हैं, ठीक है, दे आर एक्सपर्ट्स, लेकिन सारे पेशेंट्स के साथ वो लोग टाइम नहीं दे पाते हैं. ये भी पॉसिबल है. सम ऑफ दिस पेशेंट्स एक्चुअली दे डू नॉट नीड एन एक्सपर्ट. तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है ना, तो एआई कर सकेगा. तो वही है, दैट इज व्हाट वी आर डूइंग इट. 500 पेशेंट्स आर गोइंग टू एन आउटडोर स्क्रीनिंग. फॉर एग्जांपल से नॉर्मल कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सबसे ज्यादा वही पे ज्यादा है. ठीक है, सो इज इट पॉसिबल कि एटलीस्ट कुछ स्क्रीनिंग आप पहले से कर ले थ्रू एआई, ठीक है, ताकि you now categorize that this sort of patients will go to this one, this sort of patients will go to this one, so this will be useful. ये हो सकता है, and this is what we are trying to do. We are not trying to say that we are replacing doctors. What we are trying to say कि हमारे पास अगर constraint है, how can we utilize this constraint to make an opportunity? That is what. सर मो क्वेश्चन होची जे प्रतिरक्षा विज्ञान को लेके मु डॉक्टर अमूल्य पंडा को जानिया चाहिए जे प्रतिरक्षा विज्ञान केतबेले आम जिते छोट बेले जन्म होला बेलू आम पाखे जो इम्यूनिटी जो कथा पड़ी कि मुझे आज कहूँ जे मु आज इम्यूनिटी करने अनेक लोक कहूँ प्रकृत ज्ञान कौन. सेकेंड क्वेश्चन हूँ जे आम बायो रिसोर्सेस ओडिशा रे जो जैव विविधता रही बायो रिसोर्सेस ताकू यूटिलाइज करी को भाई भाव लाइवलीहुड व्यवहार हो पार. आई थिंक ड्यूरिंग कोविड सब लोगों को ये वर्ड आ गया होगा इम्यूनिटी, राइट? एवरीबडी टॉक्स अबाउट इम्यूनिटी नाउ. बट मैं आपको इम्यूनिटी एक्चुअली होता क्या है मैं समझा देता हूँ. डॉक्टर मेनन है. इम्यूनिटी इज अ वेरी सिंपल थिंग इन द बॉडी. इट इज अ सिस्टम which only do two things. Listen carefully. Immunity only do two things. It recognize and respond. ये पहचानता है और कार्य करता है. It recognize self from non-self, body and pathogen, and respond. It protects the body and kill the pathogen. तो जो इम्यूनिटी का मतलब है कि हिंदी में ये जिंदगी के लिए भी एक लेसन है. अपना और पराया के बीच में डिफरेंस देखो. अपने को प्रोटेक्ट करो, पराया को मारो. यही इम्यूनिटी है. और ये जो इम्यूनिटी है बॉडी में, ये बाय द टाइम यू टूक बार्थ टिल यू अटेन पॉवर्टी, 12-13 साल तक वो इम्यूनिटी डेवलप होता है. इसके बाद आप जिंक खाओ, रोटी खाओ, सब्जी खाओ, कुछ होने वाला नहीं है. सो दैट्स व्हाई इफ यू सी ड्यूरिंग द कोविड, दोज हु लिसन टू देयर ग्रैंडपेरेंट्स, they follow all the rituals. In the childhood they live together and longer. 12 साल के बाद ये आजकल टीवी में आता है, ये खाओ,
इम्यूनिटी हटा, इम्यूनिटी मेडिसिन, कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज यू आर सैचुरेटेड। और अगेन कमिंग बैक, ये जो इम्यूनिटी वर्ड आजकल आप यूज कर रहे हैं ना, ये कोई नया चीज नहीं है। कोविड के बारे में सारे पता चल गया, ये चरक में भी लिखा हुआ है। इफ यू सी चरक संहिता, उसमें लिखा गया है आगंतु और नीज, नीज और आगंतु। नीज मीन्स सेल्फ, आगंतु मीन्स ए गेस्ट। बट सबसे अच्छा इम्यूनिटी का मैं एग्जांपल देता हूं, ये जो अपना और पराया के बीच में भेद करने का जो तरीका है बॉडी में, ये भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था। याद कीजिए गीता में जब अर्जुन ने शस्त्र छोड़ दिया था, तो भगवान ने बोला था अर्जुन ये देखो इस महाभारत में अपना कौन है पराया कौन है, अपने को प्रोटेक्ट करो और पराया को मारो, दैट इज इम्यूनिटी। एंड योर सेकंड क्वेश्चन वाज व्हाट? Actually, I spent my childhood here in Odisha. I don't know, those who are not from Odisha may not realize, but those who are from Odisha realize this importance which God has given us. This is the only state where you experience 6 seasons. पूरे 6 की 6 सीजन आता है दो महीने में. You can see. If you go to north, you go to south, and in all season, remember, we eat different vegetables. ବର୍ଷାରେ ଯାହା ଖାଉଛେ ଶୀତ ଦିନେ ନ କେମିତି ଶରତରେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛେ ବସନ୍ତରେ ଖାଉନେ. We have separate vegetables because our ancestors has developed that habit of making use of nutrition as a supplement to make it immunity. मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं जो उड़ीसा की कल्चर है, how it help in immunity. This is my personal experience. I am sure सब लोग ये एक्सपीरियंस किए होंगे. When somebody die in your home, you observe 13-14 दिन. ये उड़ीसा में 14 दिन होता है. And if you are doing the कार्यक्रम, जैसे when my father died, I did all the कर्मस. So generally उड़ीसा में क्या होता है ना, आपके पिताजी के मुंह में आग लगाते. You don't touch the body. The moment you fire the body, you take bath और 14 दिन आप क्वारंटाइन में रहते. You remember? जो भी कर्म करता है सिर्फ उड़ीसा में है. 14 दिन आप क्वारंटाइन में रहो, एक बार खाना खाओ, नीचे सो, डोंट टच एनीबॉडी. हैव यू एवर थॉट? आई डिड दैट. आई वाज थिंकिंग क्या करना है. मैं पंडित की बात सुन के सब किया. आई रियलाइज इट्स इंपॉर्टेंस व्हेन कोविड केम. एवरी टाइम यू गेट इन्फेक्शन, यू हैव 14 days of quarantine. It's not important. How did we realize this 200 years back? That is important. So Odisha has all those things. And आप देखिए वो 14 दिन जब कोई क्रियाक्रम करता है ना, जो बॉडी को जलाता है, अलग से रहता है, अलग से खाता है. और हमारे घर में ये भी बताया गया, बाहर जा रहे हो ना पैर धो के अंदर आना, हाथ मुंह धो के अंदर आना. और अगर आपके दादाजी होंगे बड़े, वो बोलेंगे सोने के समय में नाक में सोरिष तेल लगा के सोना. Basically you make an anaerobic environment so that you don't get all these. We practice during COVID. So in that way, Odisha's culture, habit and environment, we are all, it tends to make us more immunologically strong, I believe. Sir, to add on my question same way, sir देखंतु आम एसी नौचे, एसी जो पॉल्यूशन बढ़ला टेम्परेचर बढ़ुची. आम गाँव में आटू घर थिला, लोक खरा शीत भी प्रोब्लेम हो नथिला. सिमिलर वे जोटा आपन सीजनल फूड न्यूट्रिशन पाइंगे होतिला, लक्षण मिश्र बही अछि, सब रोग सेठी भल होतिला. मोर कहला कथा आज टॉपिक भी सिमिलर वे रे, डॉक्टर डोगरा इज हियर एंड यू आर आल्सो देयर. वी आर डिस्कसिंग टेक्नोलॉजी, दिस फोरम only institute or selected groups. How you suggest, because health technology can leverage the source to utilize the remotest level. If two ways, one you think of technology, how we can make it to be used rapidly. Second, it can be done at the doorstep. And second one is, it should be a source of livelihood. Because आप देखें एक गांव में एक बंदा कोई 10 इस गांव में सब जान पहचाने, he becomes a DMLT, lab technician. तो जिसको देखा भाई तेरा शुगर टेस्ट कर ले, तू टेस्ट कर ले. So my here I think Samit sir is also here, you all, skill development with technology integration, and you make it towards a more rural centric. If you can make a health technology AI maybe, but I am doing also AI work, but I am totally against the AI work to be more, because you can see now the natural interest of students has gone down. मेरा बच्चा भी वही है, कैलकुलेशन 5 से 2 मिलाओ तो कैलकुलेटर खोल के बोलता है.
That is where we are losing our natural integrity as far knowledge is concerned. We are depend too much reliable, so it should be limited or controlled. So now we should think that the technology should go more into the rural level. It should consider all level as a source of livelihood generations. So Dr. Dogra, I just request, if you are doing the research, you should more go to the villages areas with AIMS and IIT to address. Yeah. So that how I go for that? I'll tell you. Take some question, then you answer. Dr. Dogra, just Okay, जदि क्वेश्चन पचार चाहते अच्छा, तो इनके बारे में मैं बोलूंगा. एक्चुअली देखिए, आप बोल रहे हैं ना कि लाइवलीहुड कैसे है, तो माय अजम्पशन इज दैट कि अगर कोई भुवनेश्वर में आएगा, इधर कोई टेक्नीशियन इधर आके काम करेगा रहेगा, तो उसका एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा. यू एग्री विद मी? तो मान लीजिए, if a technician from a nearby village stays there, and if you basically provide the facility there itself, so the technician stays there itself, वहीं से काम करेगा और सपोर्ट करेगा टर्शियरी लेवल हॉस्पिटल को. सो आई थिंक देन इट्स विन विन सिचुएशन ना. उसको भी भुवनेश्वर आके एक एक्सपेंसिव सिटी में रहने के लिए नहीं पड़ेगा. ही विल बी स्टेइंग विद देयर क्लोज्ड वंस, एक्सपेंडिचर भी कम होगा, और टेक्नोलॉजी की वजह से वहां के जो लोग हैं दे विल ऑल्सो गेट द सर्विस. दैट मॉडल शुड कम टू इंडिया, नॉट ओनली टू ओडिशा. Actually, this should come to India itself. Otherwise, we can't survive, frankly speaking. If 2.5 crore people are staying in and around Kolkata and Delhi and Mumbai, if you assume how things, you see the pollution is going there itself because of the density of people they are staying. So objective is you make it distributed. We call it distributed. आप एक जगह पे concentrate मत करो. What sir is saying is that even virus के वजह से भी concentration आता. Just to give you an example, when the RNTCP program had initially begun in tuberculosis, there used to be a practice of taking miniature X-rays. As things stand today, it is in radiology that AI has made huge inroads, because it is an imaging technology. And yes, so taking a miniature X-ray used to be difficult because of the logistics. Now we have these phones. So if now we are giving tablets to children in school, although it has its detrimental effects, but if a person can be trained in a small module fashion to take an X-ray or an imaging which will reveal the pathology, and that referral can be facilitated. Scaling up is always a positive point for, yes, machine learning. you can scan huge number of things. Yes. I'll tell you, I was reviewing imaging and AI-based technology for assessing the pap smear data. See, generally, if you go to a doctor, you will take a pap smear, will two, 3 photograph. It may happen that the tumor is in other photograph which you may not catch. But think of a AI-based technology where you can scan thousands of pictures, and the probability of finding a small nodules in 9,990 is there, so that at least you can protect the lady in future cancer. That is the power of using imaging technology and fun. I think you will wind up. बहुत बहुत धन्यवाद. आम शुणुले देशर जदि कहबा बड़ बड़ ना जो मैंने कि कम करमती टेक्नोलोजी को आम स्वास्थ्य क्षेत्र में आनीपर से संपर्क में आम आलोचना करता. बर्तमान आम स्टेज को डाक चाहबू आम एग्जीक्यूटिव एडिटर दुर्गा सिंह को अनुरोध करी अतिथि मानक मोमेंटो दे संबर्धित करेंगे. आम सहित आलोचना करते डॉक्टर अमूल्य पंडा, डॉक्टर रमेश पी मेनन, डॉक्टर देवप्रसाद डोगरा और डॉक्टर प्रणय पाणिग्राही और डॉक्टर सी.के. दीपा.
अथर बहुत बहुत धन्यवाद जनबी आमर सम्मानित अतिथि पैनलिस्ट जो रही थे आई वुड लाइक टू express my appreciation to our guests on the stage and off the stage uh, who have taken the time out of their busy schedules to grace this occasion with their presence. And I would like to thank our Argus team जो माने कि राति दिन एकाठी काम करथिले वर्तमान भी समाने एठी रहिछंती तांको परिश्रम बिना ए सब किछि संभव नथिला तेणु अर्गस टीम को मध्य बहुत बहुत धन्यवाद एवं जो अतिथि माने वर्तमान भी रहिछंती पेशेंटली लंच परे मध्य सेमानकु भी बहुत बहुत धन्यवाद एवं अर्गस एभली भाबरे द्वितीय जदि सीजन करिसेमती आगो को मध्य करूथबो आपण मानकर समस्तंकर जदि एभली भाबरे समर्थन एवं भल पाइबा रहितबो समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद आउथरे जय जगन्नाथ No.